its best. 1 minute down, next minute up. Okay, hello everyone. Welcome to the Generation Gap podcast. I'm Taimubi, that's Daniel Ahmed, and today we will discuss the Pakistan, New Zealand, and Bangladesh Tri-Series recently concluded. Congratulations, Pakistan won, but that was really not the most important thing for us. The discussion for us was about how we are going to figure out the team coming up for the World Cup. But before we get to that, let's do a message from our sponsor. So this program is brought to you by a sporting goods company called Aftab Ik Balls. The tagline is "Kick us in the balls." So let's start off with the series. So the series, Tri-Series, after a long time for me as a 90s kid, very exciting. Really looking forward to that because, that's what I grew up on. And I had not seen a Tri-Series in quite a while now. I think it'd been like at least 10, 15 years that they hadn't done these. They were just bilateral, one after the other. So for me, before it started, I had this kind of bit of excitement, a bit of nostalgia start to it. But I was kind of surprised that I wasn't as into it once the series started. Maybe it was the timing. I don't know how many matches you got up and watched at 7 in the morning, but मतलब मैंने थोड़े बहुत देखे थे, but usually just the tail end of it. शुरू से तो मैंने कोई मैच भी नहीं देखा था. But that might have been one thing that kind of abated the enthusiasm for the whole series. But yeah, I mean that overall was a bit, I don't know why, was slightly disappointing for me कि उस level की excitement नहीं थी. But again, series overall, I feel like because we had a discussion about the England series. So compared to the England series, जहाँ पे हमारा ये ख्याल था कि यार जो हमारी शुरू में understanding थी of the Pakistan team, by the end of it we were even more confused. जहाँ पे I still feel there's some level of success that we have some players that we feel like अच्छा ठीक है, these guys have made their place in the team going forward, and we have some sort of a maybe semblance of a solution for the middle order as well. Although, to be honest, that is something that we have been talking about since the Asia Cup, and for whatever reason, we had kind of abandoned that during the England series, which was, of course, bringing Shadab and Nawaz up the order. But I think in that sense, of course, we won, which is a great thing. But for me, that's a bit of a bright spot. Okay, जहाँ पे हमारे लिए, I think it was a good thing that we were able to figure it out. To some degree कि कौन से players जो हैं वो भी हमारे अगली जो है वो चल के जाएंगे. But there are still some serious gaps there. Again, Shan Masood वाली बात. Let's come down to let's look at number 1, number 2. We have that sorted out. Number 3 is the biggest question mark right now. हमने पहले बड़े से फखर को try किया, has not panned out at all. Now we have tried Shan Masood for about 11-12 matches. He hasn't performed really. I think beforehand when we talked about Shan Masood, including what we understood was that Shan was limited in some regards in terms of his game. Because obviously what Fakhar offers is this ability to explode and score at a very high rate once he gets settled in, which Shan does not. But what Shan might have done to make up for it was कि चले मैंने ज़्यादा consistently runs बनाने हैं, very similar to the kind of strategy that Babar and Rizwan have, because they're not going to score at a very high rate. Lekin Shan Masood might have done the same thing, but he hasn't really been able to do that either. He hasn't scored a lot of runs. So I think उस sense में that still remains our biggest question mark. I feel number 3 हमारा सबसे बड़ा मसला है, maybe number 4 as well, but I think to some extent if we start sending Shadab and Nawaz up the order, and I think Iftikhar has also definitely established himself, especially final mein. And for me the biggest positive has been to some extent the resurgence of Haider Ali, who I had felt that maybe had kind of lost his form beforehand. His stats coming into this point, that encouraging. From what I remember, and for him to deliver at a big stage in a big match in a crucial moment when we needed him the most, I think that was a really heartening thing. So how do you see the Pakistan team? Like, do you agree with this? Like the positions in हम बात करें so far, at least in terms of like the batting order.
You mentioned a few things. एक तो the first thing I noticed इसके बारे में मैं आपस में I think मैं ग्रुप पे ही मैंने मजाक उड़ाया था. But like one thing I kept noticing was throughout the New Zealand series, ये इफ्तिखार को छुपा के रख रहे थे बैटिंग ऑर्डर पे. I don't know why that was happening. But like, he's a middle order That batsman one और वो J, आठवें हाँ, नंबर तक नहीं आ रहा. जिसको आप, Yeah, हाँ, उसको आपने स्क्वाड में आगे रखा हुआ है कि अच्छा हाँ ये भी है। Like, yeah. वो मतलब बाकी हमें पता नहीं चल रहा था कि yes he's also in the team. Like we barely saw him do. थोड़ी बहुत bowling भी की थी. I think he did less bowling in this series, right? Compared to the England one. Yeah. So he's like, why is he in the team? But like, um, Shan Masood, हाँ, so like उस sense में, but like final में, I think चल गया. But I don't know. I never know about Iftikhar. Iftikhar is a very mediocre player. जब चल जाता है तो चल जाता है. जब नहीं चलता तो बहुत बुरा लगता है. Like it's very hard to form an opinion on someone like Iftikhar. Uh, हाँ, I think जो bottom line है about a lot of these players is कि they cannot come into terms with the fact that they are not T20 players. This goes for Shan Masood हाँ, as well. होता ये है कि I think deep down Shan Masood knows कि he's not fit for this format. उसकी टेक्निक इस तरह के फॉर्मेट को सूट नहीं करती. He's an ODI player, he's a test player. बट मसला ये है कि मटीरियल रियलिटी हमारी जो क्रिकेट की वो ये है कि अगर आपको पैसा बनाना है रिटायरमेंट से पहले आपको T20 हाँ. खेलना पड़ेगा. So you kind of force yourself to be a T20 player when you're really not, and you see that a lot in Shan Masood. I mean, his average isn't bad. It's 25, which is a decent average in T20. His strike And rate his is also PSL high. record is pretty. Hmm? His PSL record is pretty good, especially last season. उसका और क्या कह सकते हैं रिजवान की partnership was really good for Multan Sultans. Yeah, I think my point is that yeah, he might be a very good opening batsman, but I think agar if you as a player, especially if you're an opening batsman, in my opinion, in T20 should be able to come in at any number, a good opening batsman. So when we talk about Rizwan and Babar, these are players जो middle order में भी आ सकते हैं, lower order में भी आ सकते हैं, because I think T20 में एक innings इस तरह सेट होती है कि आपको पूरे 20 ओवर खेल सकते हैं आप potentially अगर आप अच्छा खेलें तो. And apparently both of them were middle order batsmen at the start of their career. Like Babar was like number three, number four. Rizwan was playing number five, number six at the start of his career. Yeah. So if you as a player जो like नंबर 3 पे आके या अगर आप 8वें या 10वें ओवर पे आके आप स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, आपसे हिट नहीं होता, then maybe this format is not for you because this is something जो हर प्लेयर को फेस करना होता है. बिकॉज पावर प्ले के बाद 8वें 10वें ओवर में मारना तो होता है ना. आई नो फील्डर्स होते हैं खड़े हुए ज़्यादा, बट लाइक यू स्टिल नीड दैट स्किल. इफ यू डोंट हैव दैट स्किल दैट यू नॉट देन यू नॉट कट आउट फॉर दिस फॉर्मेट. So here's an interesting question in my head about this. So हम सीरीज में बात करें कौन से प्लेयर्स ने अपनी जगह बना ली है. So which players are definitively in your mind just not working out for the Pakistan team right now? I would say मैं पहले अपना बताता हूँ. Shan Masood for me at number three, and then at this point even Asif. Like इस सीरीज से पहले I would have felt कि शायद आसिफ जो है is still part of the team. I felt a lot more certain about Asif. Post this series I don't like Asif का. Maybe it's the Tanveer Ahmed vlogs that have affected me at this point. उन्हें देखने के बाद मेरा माइंड भी चेंज हो गया है about Mr. Remember the Name. लेकिन I'll be very honest, I am not happy with his performance at all, and he has not performed for a considerable period of time. There's also a very, I think you might have seen that as well, hilarious कोई किसी meme page बनाया हुआ Facebook पे. I think it's called the 156s Club or something. Have you seen that? No. Oh, basically, it's entirely about Asif. और आसिफ की वो जो नहीं बात थी, इसका मजाक भी बनाया था इंग्लैंड वालों ने कि जी ये बंदा रोजाना 156 या 156 सिक्सेस जो है वो मारता है Yeah. प्रैक्टिस में. सीरीज में कितने Then बनाए थी? पूरी सीरीज में कितने छक्के मारे इसने? 7 मैच की सीरीज में 2 छक्के. It's ridiculous. His record is so bad right now. I mean वो मैं कह रहा हूँ ना, इसका record at this point फखर लेवल्स का बुरा हुआ है. And even worse than that, like फखर ने तो फिर भी एक सीरीज में गंद मारा था ना. मतलब उसने वो क्या नाम है अपना एशिया कप में नहीं चल रहा था, या उससे थोड़ा से पहले की बात है, वो नहीं चल रहा था. But Asif has not played well in a while. I cannot remember the last like genuinely good जो उसने खेली थी. Maybe शायद जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक उसकी इनिंग्स थी to some न्यूजीलैंड वाली. extent I guess.
हाँ वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं, एक उसमें 25 एक मैच में मारा था, वो भी आई थिंक दैट वाज अबाउट 20 balls, इट वाजंट लाइक अ डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स और एनीथिंग लाइक दैट, इट वाज अ डिसेंट इनिंग्स बट इट वाजंट अ ग्रेट इनिंग्स. तो वही बात है, आसिफ का भी आई एम वेरी अनसर्टन अबाउट हिज पोजीशन. आई डोंट नो इफ ही शुड बी इन द साइड, क्योंकि आसिफ का तो मुझे लगता है कि लोगों ने उसको बहुत इजीली फिगर आउट सॉर्ट ऑफ कर लिया है कि कौन सी चीज वो नहीं खेलता, एंड दे जस्ट कीप बॉलिंग इट टू हिम एंड ही हैजंट रियली इवॉल्व्ड हिज गेम. उसको स्लोअर बाउंसर करवाएं, वो हमेशा एक ही तरीके की लेजी किस्म की पुल शॉट मारता है, जो कि आइदर उसके हेलमेट पे लगती है या बैक ऑफ हिज बैट पे लगती है, या he bottom edges it or something. I remember him being able to hit the pull shot fairly well. Like the first time I remember him was in the PSL जब उसने हसन अली को पुल पे छक्के मारे थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जिताया था उसने. That's my first memory of Asif Ali. So I remember him as being someone who could pull the ball pretty well. लेकिन अब तो मतलब उसकी पुल शॉट है मेरे को लगी नहीं. वो था कि of course हसन अली उसको स्लोअर नहीं कराई थी, हसन उसको पेस पे करा रहा था. अब जितने भी लोग हैं ना, they just dig it into the pitch and he just can't seem to hit that ball at all. तो उसको या तो आप वही एक सेम डिलीवरी करवाएं मे बी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जहाँ पे वो पीछे होके उसको रख के छक्का मार दे तो ठीक है, बट अदरवाइज या आप स्पिनर लगा दें या आप उसको स्लोअर बाउंसर मारें तो उससे नहीं लगता. इट्स लाइक सच अ बेसिक किस्म की कमजोरी इसकी है व्हिच ही हैजंट रियली ओवरकम एंड एवरीवन एल्स हैज काइंड ऑफ फिगर्ड आउट एज वेल. तो वही बात है कि इवन एट दिस पॉइंट हिज स्ट्राइक रेट इजंट दैट ग्रेट आइदर, क्योंकि अभी उसका इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट लाइक 130 समथिंग, और आपके जो बाकी लड़के हैं जो कि मे बी अवेटिंग इन द विंग्स हैव स्ट्राइक रेट्स ऑफ लाइक 140, कम जमाल की बात नहीं कर रहे थे, the all-rounder. So I think he has like strike rate of around like 140 or something at domestic level. So I think वो भी उस तरह से deserve तो करते हैं chances. क्योंकि आसिफ का वही बात है कि आपने उस बंदे की 15 की average है, how much exactly are you missing out on if you take him out and replace him with someone else. मुझे लगता है आसिफ की जगह at this point नहीं बन रही और इसकी जगह नहीं बन रही. Maybe to some extent दहानी की भी अभी नहीं बन रही. हसनैन hasn't really bowled as well either. हसनैन is like very hot and cold. एक मैच बहुत अच्छा खेलता है, बहुत पास हो जाता है. दहानी ओवरऑल आई थिंक इन तीन प्लेयर्स की मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि जगह नहीं बन रही. तो मैं दहानी, शान एंड क्या कहते हैं, किसी बात कर रहे थे, हाँ आसिफ, probably don't justify their position right now. बाकी आई डोंट नो आपके माइंड में किसका चल रहा है. Maybe you have some other people in Yeah. mind, or do you agree with this or not? So I think आसिफ तो जाएगा, because I think आसिफ की सबसे बड़ी जाने की वजह ये है कि I think अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया, because I think they really handled हैदर अली का केस very well in this tri series, where उसके साथ उसको बस ये बोला है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको बस हम नीचे भेजेंगे, आपने मारना है, and that has worked really well for him, because in all of the innings that he's performed, he's just hit it out of the park. हाँ, And उसको यही बोला है कि लाइक जयसूर्या की तरह बोला है कि लाइक आप आउट भी हो जाओ भले, लेकिन मारना है आपने. And that has worked really well in terms of the way that he carries his game in general. So that very ultra aggressive approach has worked, and he also plays sensible shots. He is a 360 player. जब वो खेलता है तो ऑन साइड भी मारेगा, ऑफ साइड भी मारेगा, एंड लाइक हर बॉल को वो हिट कर सकता है पोटेंशियली, वर्सेस आसिफ जो हमें पता है सिर्फ 2-3 बॉलों को ही मार सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट. सो I don't think there's any need for Asif now that Haider Ali is. They have, I mean, props to the team management. They have but established a suppose opener हाँ, to a middle order but position. suppose you Asif out, who do you replace Asif with? Like there's a slot in the team, right? आपने उसको निकाल दिया. Do you put another bowler in? Do you put another all-rounder in? Jamal को डाल दे Shine, वहाँ पे. Another bowling there as well. Who do you put in? you put Another Shine. extra batsman maybe? No, Shine को डालते हैं. Shine की जगह बनती है ना टीम में. तो like आप एक बैट्समैन को हाँ, निकालते हैं. बैट्समैन तो हमारे पास निकलने वाले तो बहुत हैं. So like वो चलने तो वाले तो need. बहुत हैं. Yeah. So like तो उसको Exactly. निकाल दें. Okay, Shine speaking को of bowlers, if we are talking about bowlers, मैं कहूँगा कि अभी already हमारे पास a lot of people are making good cases for themselves. And now surprisingly, जो क्या नाम है, वसीम जूनियर जो है, he was the second highest wicket taker in the series. nice. Like I think he took 7 wickets in the series, which is the second highest, I think. So surprisingly, he's actually also made a good case for himself to be in the team. So वही बात है कि अब उनको कहाँ अभी इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि फास्ट बॉलर्स में किसको रखें और किसको ना रखें, बिकॉज द कंपटीशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस में जैसा यही कह रहा था कि इवन शाहीन को थोड़ा बहुत परेशानी होनी चाहिए कि हाउ ही गेट्स इनटू दिस टीम, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग वेल, जो कि स्पेशली फास्ट बॉलिंग स्लॉट्स पे दे रहे हैं. स्पिनर्स ऑलरेडी आपके दो बहुत अच्छे हैं, एंड एट दिस पॉइंट यू प्रोबब्ली नीड द स्पिनर्स मोर फॉर देयर बैटिंग देन फॉर देयर स्पिनिंग एट दिस पॉइंट. दैट्स आल्सो अ बिग फैक्टर.
क्योंकि शादाब की बैटिंग भी ना भूलें, he will play a very important role as well, I feel, in the World Cup. एंड नवाज तो ऑलरेडी फॉर्म में है, तो आई थिंक उसका भी डिफिनेटिवली एक बहुत बड़ा रोल होगा. ज्यादा अभी वही बात है कि आप फास्ट बॉलिंग में किसको फिट करेंगे और किसको निकालेंगे. अभी एट दिस पॉइंट वही बात है कि दो लोगों को लगता है, तीन लोग तो लाजमी जा रहे हैं, जिसमें नसीम है, शाहीन है और राउफ है, हारिस राउफ. That's तो very deadly. Like I'm so excited for this. और हाँ, मोहम्मद वसीम, वसीम अगेन लुक्स रियली गुड. ही बोल्ड रियली वेल. उसका ये है कि इट कुड बी अ बिट हिट एंड मिस इन टाइम, कि कुछ मैचेस में जब उसको कुट पड़ती है तो बहुत बुरी कुट पड़ती है. ही इज वन ऑफ दोज कि अच्छा खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा, और जब बुरा उसका चल रहा होगा तो फिर वो बहुत ही बुरा हो जाएगा. मतलब इन द सेंस कि ही डजंट नो हाउ टू पुल इट बैक. जैसे हारिस का है कि हारिस की एबिलिटी टू पुल इट बैक. उसको अगर आप एक आध ओवर में मारेंगे तो अगले वाले में आके वो विकेट निकाल लेगा या वो कम कम रन देगा. ही नोज हाउ टू वेरी हिज बॉलिंग अलॉट. तो उसको लगातार नहीं पड़ती. वसीम का थोड़ा सा मसला है कि अगर उसे पढ़नी शुरू हो जाए, वंस मोमेंटम गोज अगेंस्ट हिम, तो वो उसको बहुत बुरी मार पड़ जाती है. इफ ही कीप्स द मोमेंटम, ही इज एक्चुअली जेन्युइनली गुड. एंड ओवरऑल सीरीज में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. और ऐसी कंडीशंस में ही इज अ स्विंग बॉलर एज वेल, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स एज वेल कि जिस तरह उसका स्लिंगी किस्म का एक्शन है, ही गेट्स अ लॉट मोर स्विंग, ही कैन गेट विकेट्स इन दैट सेंस एज वेल. ही माइट बी एबल टू डू समथिंग इन द मिडिल ओवर्स, जहाँ पे पहले हसन अली विकेट्स दिया करता था, तो वहाँ पे आके ही कैन डू समथिंग देयर एज वेल. बट वही बात है कि अब आप किसको रखें, किसको निकालें. बट आई थिंक इट माइट बी पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू रिमूव आसिफ. आई एग्री विद दैट एंड पुट इन, वही बात है, इसको शाहीन को, बिकॉज यू नो लेट्स गो विद आवर स्ट्रेंथ्स एंड लेट्स स्टैक आवर स्ट्रेंथ्स, राइट. क्योंकि अब and bat well. मतलब हाँ, लाहौर के लिए इनिंग्स खेली थी. आई डोंट नो हाउ वेल ही कैन बैट. उस एक इनिंग्स में ही डिड परफॉर्म रियली वेल. आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही कुड बैट एज वेल एज ही डिड. लेकिन उसका वो नसीम शाह वाला सीन मेरे साथ मेरे ख्याल से हो गया था, क्योंकि इट बिकम्स अगेन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है. जिसमें याद है कि अभी पिछली एक सीरीज में, अभी तक के भी जो सीरीज चल रही थी, उसमें क्या नाम है, नसीम से आगे दो बैट्समैन थे, आई रिमेम्बर, जब ये फाइनल हो रहा था. और नसीम ने जो है ना, वो ऑलरेडी अपने लगा के बैठा हुआ था, पैड्स लगा के बैठा हुआ था. तो मतलब भाई तेरे को दो अभी बैट्समैन है, रिलैक्स कर जाओ. अब दो छक्के मार दिए थे, लेकिन दो फुल टॉसें थी. सो आई मीन यू नो दिस मेक यू ब्रायन लारा. इसका मतलब ये है कि थोड़ा रिलैक्स कर जाए. तो थोड़ा बहुत शायद मे बी इसका भी था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आई एम श्योर शाहीन के अंदर बड़ा होगा, बट वही बात है, इट्स प्रॉब्ली मोर कॉन्फिडेंस देन स्किल इन दिस पॉइंट. But I think it's a better strategy for us to go with our strengths and you know maybe make our bowling a lot stronger. हमें पता है हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, और again जो हमारे weaknesses हैं, we again saw them on display, because I feel like in some ways New Zealand जो है ना, वो wasn't the best opponent for us, because हमारी they play the same way that we do. न्यूजीलैंड की भी वही एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की है कि जी आपने ऊपर से स्लो खेलना है एंड देन आपने बिल्डअप करके फिर आखिर में जाकर आपने हिटिंग करनी है. उनकी भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान की. तो वी यू नो आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट ऑनेस्टली. हमारे साथ मसला तब होता है जब हम ऐसी टीम के साथ, इंग्लैंड वाली है जो कि थ्रू आउट हिटिंग करते रहते हैं, व्हिच इज गो आफ्टर यू. तो उस पर्टिकुलर चीज के साथ हमें डील करना एग्जैक्टली नहीं आता, स्पेशली विद आवर बैटिंग, बिकॉज वो फिर इतने बड़े टारगेट्स हम चेज नहीं कर सकते. इफ उनकी बैटिंग चल जाए, दे यू नो हिट 180 200 समथिंग, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्टी थी. आई थिंक वी हैंडल देयर बॉलिंग मोस्टली वेल. एक आध मैच में चल इतना नहीं हुआ था, लेकिन अगेन आई फील लाइक इट वाजंट द टफेस्ट ओपोनेंट फॉर अस. आई थिंक आवर काइंड ऑफ गेम इज वेरी वेल सूटेड टू न्यूजीलैंड. उनको हम यूजुअली विद आवर टीम काफी आराम से हरा सकते हैं, barring you know some exceptional performances here and there, but otherwise I think I would always back the Pakistani team against the New Zealand team. हमारे लिए उस सेंस में maybe wasn't great preparation, but I think overall I think हमारे लिए mainly चीज हमने यही सीखी थी कि you know we need to, I think एक तो जो experiment for whatever reason, I don't know क्यों उन्होंने छोड़ दिया था, but again this particular series was you know a proof that we should be doing this more often. वही जो हमने किया था कि हमने सिर्फ एक दफा नवाज को ऑफ द ऑर्डर भेजा था इंडिया के खिलाफ, एंड इट वर्क रियली वेल. उसके बाद हमने बहुत रेयरली, वी जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल. बट आई थिंक इस सीरीज में वी ट्राई टू डू इट मोर ऑफन. हमने शायद आपको भी ऊपर भेजा, हमने इसको भी ऊपर भेजा. आई थिंक समवन वाज पोस्टिंग स्टैट्स अबाउट इट दैट वी हैव डन इट लाइक 4 times in 5 matches and we won 4 of those matches.
So it's a very, very successful strategy for us. Yeah, but So it's kind of nonsensical because एक इनिंग में शादाब ने परफॉर्म किया, we made like 35. नेक्स्ट इनिंग में उसको 10वें नंबर तक बैटिंग नहीं आई उसकी. Like there were 8 counts हाँ, bowled. I think like what are they? they not Yeah, what they are they haven't done a thinking? हाँ, I agree. वो मैं कह रहा हूँ कि उस तरह से हमारा I do understand कि there is a very basic perhaps आप कह सकते हैं misunderstanding of the kind of the strategies of T20 currently. But it's I think you might have seen that video आई थी इसकी Jared Kimber gave recently about the evolution of T20 cricket, right? Yeah. So it is about कि maximizing every single ball, right? और वही सेम स्ट्रेटजी आपकी है कि आप यू हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप एंड व्हिच मींस के जितने बंदे भी हैं ऊपर से नीचे तक दे कैन ऑल कीप हिटिंग, क्योंकि बॉल्स ही थोड़ी हैं, तो इट्स स्टिल पॉसिबल टू कीप गेटिंग आउट बट स्टिल नॉट लूज ऑल द विकेट्स बाय द एंड, क्योंकि 20 ओवर है, कितने आप लूज कर जाएंगे. सो स्लो बैटिंग करना, बिल्ड करना इज जस्ट a very old school strategy and we should probably not, and वही बात है कि it's on the way out. Pakistan still sticks to it. Pakistan has had a level of success with it. I do understand that. So in some ways, people might argue that it's a legitimate strategy on its own, and doesn't mean that अगर एक particular strategy बाकी टीम ने अपनाई है तो पाकिस्तान भी वो करे. But there is something to be said about the way it makes sense to me. Does Pakistan I would need say कि does Pakistan need क्या to थी? evolve strategy? Because like in the sense कि हमारी bowling इतनी अच्छी है कि हम अगर हम चेस कर रहे हैं, हम टारगेट सेट कर रहे हो, either way we have the possibility of winning because हमारी bowling बहुत अच्छी है. हाँ, So exactly. That's what I'm saying. ना. yeah, From my point is कि the strategy itself is bad. It's being papered over by an excellent bowling attack. क्योंकि yeah, अगर आप इसको इन आइसोलेशन देखें ना कि जी यू हैव अ बैटिंग स्ट्रेटजी एंड यू हैव अ बॉलिंग स्ट्रेटजी, राइट? तो अगर हम सिर्फ उसे बैटिंग स्ट्रेटजी को उठा के देख लें तो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेटजी इज फार बिहाइंड एंड इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. अगर सिर्फ और सिर्फ आप बैटिंग की बेसिस पे लड़ रहे होते टीमों से तो आप तकरीबन हर मैच हार रहे होते, especially against teams जो कि थोड़ा सा which have like stronger batting lineups and have better batsmen overall. उनके साथ आप compete कभी ना कर पाते, and that's been a huge problem, and we saw that against England where our batting lineup was struggling and it was only our bowling that was just keeping us our head above the water. अगर हमें प्योरली अपनी बैटिंग पे रिलाई करना पड़ता तो वो तो सिर्फ एक मैच था जिसमें हम, वही बात है कि बाबर और रिजवान चले थे जो हम जीत गए थे. अदरवाइज तो बिल्कुल हमारे बैट्समैन तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, जितने में सिर्फ और सिर्फ रोल हमारा जो है वो बॉलर्स का था, प्राइमरीली बॉलर्स का था फॉर मोस्ट ऑफ द सीरीज टू कीप द मैचेस कंपेटिटिव एट द वेरी लीस्ट. तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि द बॉलिंग इज पेपरिंग ओवर द स्ट्रेटेजिक, क्या आप कह सकते हैं, मिस्टेक्स दैट वी मेकिंग ऑन द बैटिंग फ्रंट. तो उस वजह से मुझे लगता है कि दैट कैन बी इम्प्रूव्ड ग्रेटली. अभी फिलहाल वो बात है कि आपकी मैं देख रहा था नंबर्स जो उन्होंने दिए हुए थे ब्रेक डाउन कि जी पहले आई थिंक 5-6 ओवर्स में कितना आपका रन रेट हो रहा है, आपके मिडल ओवर्स में कितनी स्कोरिंग हो रही है और आपके फाइनल ओवर्स में कितनी स्कोरिंग हो रही है. इंडिया वाज इन द टॉप इन ऑल लेवल्स, मिडल ओवर्स, पावर प्ले, फाइनल ओवर्स, सब में वो टॉप 2 में आ रहे थे. पाकिस्तान वाज ओनली टॉप 2 इन द फाइनल ओवर्स बट स्टिल नॉट नंबर 1. बाकी जो आपके पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में भी वो लाइक मे बी नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 के आसपास हम चल रहे थे. सो हमारी रेटिंग सॉरी जो स्कोरिंग रेट है इट्स एक्सीडिंगली स्लो, एंड वही बात है कि वी कैन सेव आवरसेल्व्स बाय आखिरी ओवर में हर दफा हिटिंग करके निकल सकते. दो लाइक 2/3 ऑफ द फेज ऑफ द मैचेस का जो उसमें उसमें तो हम बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर रहे. हम वे लाइक नंबर 5 और नंबर 6 एंड इट्स बेसिकली अ बॉलिंग दैट्स काइंड ऑफ पुलिंग अस अप. हर दफा इट्स लेफ्ट टू द बॉलिंग टू सेव आवर एसेस, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है. दिस इज वेरी क्लासिक 90s प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान की. वही होता था, बैटिंग हमारी चलती नहीं थी एंड देन द बॉलर्स वुड कम एंड सेव आवर एस, क्योंकि 200 का टारगेट टीम बनाती थी और उसके बाद बॉलर आते थे उनको 180 आउट कर देते थे. even though 90s की तो batting was very good, the lineup नो itself. मतलब हाँ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आई रिमेंबर वाचिंग इट, मुझे फिर डर लगा था, होता था कि इन्होंने रन्स कोई नहीं बनाने और चेस वो कभी कर नहीं सकते थे. These guys can still chase a lot better than that particular 90s team. 90s team was terrible at chasing. हमेशा बहुत गंदा चेस करते थे. ये लड़के फिर भी कुछ ये चेस कर लेते हैं. They are much better at that. This is a better batting lineup in my opinion than the 90s team. But 90s team का भी वही था कि again same वही था उनका भी कि उनकी bowling जो है बार-बार बैटिंग को बचा रही होती थी. It was like very lopsided in that way. अभी भी हमारी बहुत lopsided है. सेम वही बात है कि आपकी बैटिंग में हमें समझ नहीं आ रहा किसको रखें, और बॉलिंग में लिटरली
there's just too many good players and we don't know उनको fit हम कैसे करेंगे टीम के अंदर. बिल्कुल opposite situation बनी है बैटिंग और बॉलिंग के अंदर. तो यहाँ पे again वही हमारा मसला चल रहा है. I would say कि end of the series we have some solutions at least. We know a little bit more compared to where we were beforehand. So in that sense it's a success. But problems जो पहले के थे वो अभी भी exist करते हैं. I still feel like final में I don't know what the hell the opening players were doing and what the first three batsmen were doing. क्योंकि it's kind of criminal. We lost one wicket and 11 overs में हमारे 70 something runs थे, if you remember that. और उसके बाद आके नवाज ने और बाकी लोगों ने बचाया था. Going back to the original point जो रेहान उल हक वगैरह बाकी लोग भी रेज करते रहे हैं कि यार how realistic can we expect the team lower players or lower order players to come in and score at 11-12 runs and over every single time they're coming into bat. And yes, I agree, our opening batting pair, it's still a lot better than our middle order. But there are questions that we need to ask about the strategic approach that we have. कि जहाँ पे we're putting too high a value on our wickets. I think that is a problem. और जहाँ पे वही बात है कि if we have a system where people can score at a much higher rate up front, ताकि हमारे middle order pressure थोड़ा कम हो, and maybe we can see all these players performing more consistently, and we would not need to send in like pinch hitters like Nawaz and maybe Shadab up the order in order to cover for that. वो भी एक issue है that's been there. It's less of an issue, but it is an issue, a strategic issue जो हमारे पास एक कमजोरी है. And I think वही बात है कि that isn't being talked about enough, and it's being papered over by the excellence of our bowling lineup. And it might continue to be that way. Who knows? क्योंकि वही बात है, it's World Cup आ रहा है, it's a knockout tournament. On the day कुछ भी हो सकता है. तो again, if we win, for example, तो it will get papered over कि हमारी जो strategic कमजोरी है जो हमारी चल रही है बड़े अरसे से, which we have not really covered up. And Pakistan has evolved a lot. Pakistan has modernized its cricket considerably. Comparing it to like the early 2000s up to like 2010 and so. जब हमारी cricket strategy was back in the 90s or something, और हमने बिल्कुल evolve नहीं किया था, and because of PSL we actually came a long way. But I feel like maybe either जो हमारा coaching staff है maybe से plan हो गया, या बाकी क्या नाम है अपना अभी कौन है, was also Shan वगैरह, maybe Shan to a lesser extent, but जो हमारी management है, I feel like उनकी that this is their particular strategy. I'm not as aligned with it. Maybe they feel like this is the only way it can work for the Pakistan team. उनकी हमारी particular type of batting को देख के वो चल रहे हैं. Maybe it's not really their fault. Either they're looking at the team, the entire Pakistan domestic sector, कह रहे हैं कि यार मुझे तो 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट नजर आ ही नहीं रहा. Who the hell do I pick कि ये जो जाके तेज बैटिंग करेगा, right? But I mean, look at the Sri Lankan team as well. उनके भी strike rate बकवास थे. Like उनके जो career strike rates हैं जितने भी batsmen के हैं, they're actually pretty bad. Like the 110, 120 के आसपास हैं, but they actually played with a different strategy that actually helped them out. लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना बस go and try to attack. And they actually had a lot of success because of that. Asia Cup जीत के. Sri Lanka has to play a qualifier after winning the Asia Cup. एशिया कप, हाँ चले वो उनके साथ वही बात है कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से पहले इतनी अच्छी नहीं रही थी. They hadn't been as good before, but ये मैं कहूँगा कि from a strategic standpoint, I still feel like this way of playing at least T20 cricket is far more effective, and it will yield more results for Pakistan compared to the way we're playing right now. But of course, there's the caveat that maybe we don't have the right players for that. And maybe that's how the management is seeing it. क्यों लगता है कि यार हमारे पास attacking players नहीं हैं, हम कहाँ से लाएंगे? और लिहाजा हमें फिर we have a good bowling lineup. Let's try to get a decent target on board, and then allow our bowling to kind of take over later on. कि ये ना हो कि मतलब hitting के चक्कर में जो है वो सारी टीम 110 पे आउट हो जाए, 120 पे आउट हो जाए. इसके बजाय अगर आराम से खेलेंगे तो we might be able to get 145, 150, and that gives our bowling a decent target every single time. So maybe that's what they have in mind, कि वो अपनी sort of weaknesses को देख के उसके मुताबिक strategize कर रहे हैं, and that's why Pakistan is not playing that style of cricket which a lot of other teams have started to adopt. India ने भी consciously इसको adopt किया है पिछले since Rohit Sharma came on board, जो hashtag intent की हम बात करते रहते हैं.
Australia has been playing that way. England has been playing this way for a while now. So वही बात है कि अगर आप देखें टॉप 3 फेवरेट्स आपके जो हैं इस वक्त वर्ल्ड कप के ये 3 टीम्स ही हैं who are playing with this particular strategy, and Asia Cup में Sri Lanka won with this particular strategy despite having players who were not good enough. I would still say the Pakistan team is far better than them, but strategically they beat us. Speaking of India, I think this contest जो India और पाकिस्तान का होगा, it would be even more interesting than the Asia Cup matchups because बात ये कि अब वो एक inverse dynamic बन गई है between Pakistan and India. Because India की batting is the best out of all. पूरे tournament में इससे बेहतर batting किसी की नहीं. You can see that clearly. And Pakistan is the best bowling lineup of the tournament. Nobody even comes close. अब That's बात like a ये very है classic thing. That's always been yeah like a very classic Pakistan India contest, like best bowling versus best batting. हमेशा से लोग yeah बड़े से like 2000 early 2000 से खास तौर पे but ये like चला है. 90s में तो इंडिया की बैटिंग भी इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ since the early 2000s it's been this kind of a competition कि अच्छी bowling और अच्छी batting का मुकाबला sort of. yeah I know but like I think what's interesting is कि this is not the recent India that we've become accustomed to because India की bowling बहुत अच्छी हो गई थी but एकदम से due to injuries and whatever India की हाँ bowling is shit now एकदम से and हमारी बैटिंग का तो हमें पता है like this I mean अगर इंडिया का अगर वो if Jasprit Bumrah had not gotten injured uh, India was the favorite going into this World Cup match but अब वो evenly matched हो गए so like Bumrah and Shami अगर टीम में होता तो I don't think we would have stood a chance given our current batting lineup बट अब वो एक इनवर्स डायनामिक बन गई है कि वो क्लासिक इंडिया है जिसमें बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है और बॉलिंग लाइनअप है ही नहीं लाइक जैसे एंड लाइक पाकिस्तान है जिसमें लाइक बैटिंग लाइनअप बस सेम ही है और लाइक बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है सो अगेन इट वुड बी हाँ इट्स अ वेरी 50-50 कॉन्टेस्ट नाउ सो हाँ उसमें एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज वन अगर मैच हो गया तो बिकॉज ऑब्वियसली ये लॉट पीपल आर सेइंग बारिश हो जाएगी और मैच होने नहीं वाला जिस हम भी कहते हैं कि नुकसान होगा आईसीसी का they're about to lose a lot of money अगर that if that happens लेकिन अगर मैच हो जाता है let's hope it does happen तो yes this is a very much a classic sort of a thing but do keep in mind कि बुमराह तो फाइनल में भी था for example 2017 में भी और he didn't do much there. So I mean, we can deal with him, but of course, वही बात है कि he is an excellent bowler, and it is going to be a huge disadvantage for them कि हमारा जो spearhead bowler था वो वापस आ गया है शाहीन और इंडिया का नहीं आ सका. या So that is a major disadvantage for them. Otherwise, even at this point, Pakistan is kind of edging them, especially after the last game as well कि जहाँ पाकिस्तान उनको एशिया कप में नॉकआउट कर दिया था. So psychologically भी पाकिस्तान के पास एक advantage है. But it's going to be tough क्योंकि वही बात है कि वर्ल्ड कप में there is no margin for error literally. एक मैच भी हम नहीं हार सकते. It's like razor edge के ऊपर है. जरा सी if we go in with the wrong momentum we'll be out before we know it. So वही बात है. It's going to be tough. बहुत मुश्किल टूर्नामेंट होगा and especially given how much T20 is being played, it is right now the toughest tournament to win. जितनी नई जो स्ट्रैटेजीज लोग लेके आ रहे हैं जितने नए स्टाइल के प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं जितनी ज़्यादा सीरियसली इसको लिया जा रहा है it is so much harder to win this one right now. I think probably ODI World Cup जितना ज़्यादा आसान है इस टाइम पे T20 World Cup जितना बहुत मुश्किल है. Everyone's taking it really seriously and it's going to be tough. और बिल्कुल बहुत थोड़े से मैचेस हैं 3 मैचेस हैं आपके पास no margin for error right now. एक मैच भी आप हार गए बहुत मुश्किल है. क्वालिफायर वो सॉरी दो वो होंगी एसोसिएट टीम्स होंगी तो लाइक वो भी एक बात 5 मैचेस हाँ सिर्फ दो एसोसिएट टीम्स है ना हाँ राइट. एसोसिएट टीम्स हाँ तो वही बात है कि नो इजी गेम्स आइदर और वेरी फ्यू इजी गेम्स and one of the associate teams is Afghanistan or not. They are this in Afghanistan or they be given अफगानिस्तान international status. Bit confused about that. क्वालिफाई नहीं खेल रहा तो Hmm? अफगानिस्तान क्वालिफायर में नहीं है तो आई थिंक देयर आर प्रॉपर टीम So वो नहीं खेल. ठीक है. चलें let's see. Let's hope it goes well for them. But चलें I think that's all we have to discuss for now. I think जो New Zealand की series में there wasn't much else to say. I did want to add कि like New Zealand did not really play well at all. They Hmm. didn't even like जो last year के World Cup finalists थे. I don't know what's happened. एक तो बोल्ट के अलावा कोई अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं रहा और एक तो बोल्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो like it doesn't look well for them. Saudi I was not impressed with. Like Saudi अगर अपनी home pitch पे like every single ball जिसने final में कराई है that was off cutter कराया जा रहा था बार बार.
ऑफ कटर को मारे हाँ। जाते हैं. Yeah, it was like it was almost like he was a specialist fast off spinner, not an actual fast spinner. Yeah, and like I think Exactly. एक जो उनका bright spot था वो Bracewell है, but Bracewell is a spinner in Australian pitches. I'm not sure. Conway, I think Conway or Bracewell, basically. They're the only Yeah, ones who played well. so Sudhi we know is awful. I don't know. मैंने इसको पहली बार पिटते हुए नहीं देखा. He's not suited for this format. So like इनकी bowling बिल्कुल ही खत्म है barring Bolt. And batting और maybe I back was not impressed. to Like explosive players, right? उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा attacking players है नहीं इस point पे. मेरे को अच्छा से भी डर है. Sorry. Phillips है एक अच्छा जो मारता है. Williamson plays like Babar Azam. Yeah, even worse probably. बहुत slow खेलता है. तो मतलब हाँ, विलियमसन तो वही सेम बाबर आजम स्ट्रेटजी से खेल रहा होता है. Yeah, कि उसने रन ज्यादा मारने हैं. He's not going to score at a very high rate. He can be the anchor, but again, we हम कह रहे हैं कि anchor strategy is not very successful in T20, modern T20 cricket especially. तो वो एक चीज है कि अगर वो रन मार भी देता है, and he did score a few runs in the final, but it wasn't really that useful for them. Yeah, I think I don't fancy their chances honestly after this series. Unless they pick up like New Zealand always does during the World Cup, जो एक क्लासिक उनका एक तरीका रहा है, but unless that happens, but other than that मुझे लग नहीं रहा कि उनकी टीम बहुत परफॉर्म करेगी. वही है तो आपके most likely मुझे लग रहा है इंग्लैंड seems to be like the biggest favorites for me. और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरह, क्योंकि चाहे उनकी टीम शिट भी हो लेकिन यू कैन नेवर डिस्काउंट देम फ्रॉम वर्ल्ड कप में आके हमेशा वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं. आजकल उनकी और T20 आज का हाँ, और आज का शिट भी नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज का शिट भी नहीं है और वो अपने होम कंडीशन में भी खेल रहे हैं. yeah, तो last आई वुड से shit इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जॉइंट फेवरेट्स मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली. yeah, देन मे बी इंडिया उसके बाद शायद थर्ड नंबर पे. But yeah, I think maybe India, Pakistan, second favorites. First favorites would probably for me be England and Australia, joint favorites only. But it's going to be a very. I think वही है कि it's थोड़ा बहुत luck पे बहुत dependent होगा. Matches पे कौन से rain out हो जाते हैं, वो काफी हद तक उस पर भी count करेगा. And since it's a T20 game, तो वो आपको पता ही है कि no margin for error. किसी ने थोड़ी बहुत गलती कर दी, anyone has a bad day, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट जीतेंगे तो मेरे ख्याल में इन टीम्स में से ही मोस्ट लाइकली समवन विल विन. आई डोंट थिंक श्रीलंका विल परफॉर्म एज वेल एज दे डिड इन द एशिया कप. देयर गेम विल बी स्लाइटली एक्सपोज्ड इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज वहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स उस तरह के आपको हेल्प उतनी नहीं मिलने वाली मोस्ट लाइकली. सो इट्स गोइंग टू बी मोस्ट लाइकली बिटवीन दीज फोर टीम्स. आई स्टिल थिंक पाकिस्तान इज अ गुड चांस because they're bowling. They will be, I think, in my opinion, like probably third, fourth, मेरे हिसाब से favorites हैं. But we will see how it goes. चलें, ठीक है फिर यार. एक advantage I do want to say कि like I know कि like ये जो team है they have like a tendency to make 200 plus, right? But one thing that we've seen in this regard is कि जब 200 का हमें target मिलता है in the past 2 years, there is a very different intent that Rizwan and Babar comes in, and फिर आप वो उसको एक तो वो आउट भी नहीं होता है और फिर वो बना भी लेता है. तो लाइक अगर चेस करने की बात है तो हम 200 बना सकते हैं. सो वी डू वांट टू गिव लाइक प्रॉप्स टू देम फॉर दैट, बिकॉज हमने रिपीटेडली 2-3 दफा किया है कि हमने 200 बना लिए चेस करते हैं. But chasing side, to be honest. या बट इट्स मोर अबाउट क्या हम क्या खुद 200 बना सकते हैं, व्हिच आई डोंट थिंक हाँ, इज एवर. batting first बहुत कम, वो भी एक या मसला है. First हम बहुत कम जाएंगे. We probably won't do that. So yeah, चलें, ठीक है फिर. I think let's conclude it for now, and we'll see you all next time. Bye.